Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna, Rama Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pasaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Namane. Namaste Sarvadi Devi Gauravare Prachadene Devi Sesha Shunyavare Paskajade Siddhartha. So we are still reading from the Darshan, San Francisco, June 28th, 1971. तो हम जो है 28 जून 1971 का अभी भी पढ़ रहे हैं, जो वार्तालाप जो है दर्शन प्रभुपाद जी के साथ वो दोबारा पढ़ रहे हैं. Prabhupada has just given the detailed explanation of the different levels of sannyas, ending with प्रभुपाद जी ने इसमें विस्तार में जो है समझाया है अलग-अलग जो स्तर होते हैं सन्यासी के, completing with Paribhajikacharya, और परिव्राजकाचार्य पे वो संपूर्ण होते हैं, wandering all over like in the tradition of Narada Muni. तो अभी हम परिव्राजकाचार्य के बारे में बता रहे हैं जो नारद मुनि. Then he says that when he's experienced, when his preaching is done, he can sit down in one place. और जब परिव्राजकाचार्य के स्तर पे जब उसकी सारा प्रचार हो जाता है तब वो एक स्थान पे बैठ जाता है. And simply chant Hare Krishna like Haridas Thakur. और हरिदास ठाकुर के भांति वो एक ही जगह बैठकर निरंतर जप करता है. But we see that what Prabhupada has created is that his Parivrajakacharya sannyasis, when I say his, I include the near devotees. तो प्रभुपाद जी हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने बनाए हैं बहुत सारे परिव्राजकाचार्य सन्यासी. Seems like every year they're adding 5 more sannyasis. और हर साल लगता है 5 नए सन्यासी जुड़ रहे हैं. Like growing trees, you know. और जैसे पेड़ उगते हैं उसी प्रकार नए सन्यासी. But I told you this is Prabhupada's plan. We haven't kind of crossed the quote yet, where Prabhupada said, "I want all of my disciples to take sannyas." तो ये प्रभुपाद जी का ही योजना है कि हम इस प्रकार जो है प्रचार करें. So that dream of Prabhupada is coming true. Of course, not everyone is fit, you know. तो प्रभुपाद जी का स्वप्न है वो आज सच हो रहा है. I have to explain. I explained about why Prabhupada was making unfit men into sannyasis. I explained already. तो मैं पहले ही आप लोगों को समझा चुका हूँ कि प्रभुपाद जी अयोग्य व्यक्तियों को भी सन्यास का स्तर पे. I told you I saw that World War II clip where a kid, 18-year-old kid, was made into a lieutenant. मैंने आपको बताया था किस प्रकार जो एक 18 वर्षीय नौजवान को भेज दिया जाता है युद्ध के मैदान में. His sergeant said, "You have to go. You have to surrender. You have to do it." तो जो उसके अधिकारी होते हैं वो उसको कहते हैं कि आपको ये करना ही पड़ेगा, आपको युद्ध में जाना ही पड़ेगा. There's 20 men are waiting for you. The lieutenant was just killed, you know, so you have to go. That's an order. In the military, you don't receive order, you know. उसको कहा जा रहा है, अधिकारी कह रहे थे कि आपको जाना ही पड़ेगा. 20 लोग जो आपके लिए वेट कर रहे हैं और जो ड्यूटी लाइन थे वो मारा गया. The kid protested, but he had to surrender. उसको उसने बहुत विरोध किया लेकिन फिर उसको शरणागत होना ही. And the sergeant pinned the stripes on his chest, you know, the colored, the breast strips with the colored silk and all that. तो उनके छाती पे जो है ये एक कलर्ड तांबे का लगा दिया गया था. They had to surrender. They had no choice.
और उसको शरणागत होना ही पड़ा, उसके पास कोई और And he had to go back the way the sergeant had come across very dangerous crossfire from the enemy. तो वहाँ से जो है जो दूसरा शत्रुगण थे वहाँ से बहुत सारे Dive into the hole in the ground when there was one and mostly hide behind trees. Extremely dangerous. बहुत सारे अस्त्र शस्त्र चलाए जा रहे थे जो सामने योद्धा जो थे, But he surrendered. और वो जो है गड्ढे में जाके छुप के जा रहा था, पर उसको युद्ध Why में he, जाना ही why पड़ा। he surrendered to that instruction? और क्यों उसको जो है उस आदेश का पालन करना पड़ा? Because there was an urgent need. That's क्योंकि why. उस समय एक अर्जेंट, Decades later, I don't know exactly where it is. I'll have to look for it one day. But decades later, I found a quote from Prabhupada where he says the exact same thing. और उस समय पता दशकों बाद मैंने ये प्रभुपाद जी का कथन देखा जिसमें प्रभुपाद जी यही कह रहे स्पष्ट रूप से। That's why Krishna showed me that video. I don't watch TV, but somehow or other Krishna wanted me to see that because I got the point. I got the point loud and clear. I got the purport. और कृष्ण का ये योजना थी कि मैं उस वीडियो जो क्लिप थी उसको देखूं, नहीं तो मैं टीवी नहीं देखता, लेकिन फिर भी कृष्ण की योजना थी क्योंकि मैं जो है उसका तात्पर्य समझ चुका था। Decades later, I found a quote from Prabhupada who was saying that unfit men are put forward in a war because it's an emergency, you know. और दशकों बाद मैंने प्रभुपाद जी का कथन देखा कि जो अयोग्य व्यक्ति हैं उनको भी युद्ध के स्थान पे आगे लाया जाता है ताकि युद्ध करा जाए। You're going to say, well, Maharaj, the emergency is over now. There's so many qualified men leading this movement, and now some ladies coming forward also. तो अब कोई कह सकता है कि नहीं, अब तो आपातकालीन जो सिचुएशन है वो कम हो चुकी है, तो फिर अब क्या जरूरत है? Actually, it's not the first time that ladies are coming forward in ISKCON, you know. It's not something new, really. अब जो है महिलाएं भी आगे आ रही हैं जो माता जी भक्त हैं। In Los Angeles, 1969, there were several women who played key roles in assisting Srila Prabhupada. तो 1967 बता रहे हैं कि उस समय भी जो है प्रभुपाद जी को सहयोग करने के लिए बहुत सारी माताओं ने सहयोग किया था श्रील प्रभुपाद जी का भी। There was Govinda Dasi, who is still a devotee. और उस समय गोविंद दासी माता जी थी जो अभी भी एक भक्त हैं। There was a Vaishnavi named Harsha Rani. She was taking a lot of responsibility for Prabhupada, you know. और एक हर्ष रानी माता जी थी, उन्होंने प्रभुपाद जी के लिए बहुत सारा भार उठाया था। Whereabouts unknown. Have no idea if she's still alive or anything. Nowadays, for my generation, you have to ask if they're still alive. मुझे पता नहीं है कि वो अभी भी जीवित है या नहीं। So in this way, Prabhupada was building an army. इसी प्रकार जो प्रभुपाद अपना आर्मी बना रहे थे। The army is not complete. और जो आर्मी है वो अभी पूरी तरह से पूर्ण नहीं है। We read about these wars like the Mahabharata phalanxes. और हम महाभारत में पढ़ते हैं कि इतने बड़े-बड़े इतने सारे योद्धा थे phalanx। Phalanx means well-organized groups of soldiers in patterns and all that. phalanx का मतलब है कि अच्छे तरह से जो है जो सेनानी थे उनको ऑर्गेनाइज करके लड़ाई करना वाला। And they were in different kinds of patterns. और अलग-अलग प्रकार के जो है पैटर्न होते थे। They were not just like the British style. One reason the British got conquered is because their habit was to march their men in very, very rigid rectangles, and they go out to fight like that. ब्रिटिश की वैसे ऑर्गेनाइज नहीं थे, ब्रिटिश लोग जो है एकदम रिजिड जो है उनको बांध के रखते हैं, एक ही डायरेक्शन में उनको चलना होता है जो सेनानी होते हैं। It was the American Revolution. American revolutionaries, they were just farmers, you know. They weren't kshatriyas, they were farmers. और उस समय जो योद्धा वगैरह भी थे तो वो लोग अमेरिकन जो फार्मर लोग थे वो सब थे। Mercantile men. तो जो व्यापारी लोग होते वो सब थे। But Krishna gave him inner dictation how to win the war. लेकिन कृष्ण ने जो है उनको अंदर से बताया कि कैसे जो है युद्ध जीता जा सकता है। I've seen, you know, Hollywood's made some good, what do you call, they're called docudramas. Docudrama. ड्रामा के बारे में I mean, it's a documentary, but it's drama. I mean, it's not 100% history. I mean, they might embellish on the story, but the thing is, it's a good history. They made a lot of films like this. डॉक्यू ड्रामा टाइप बता रहे हैं कि वो पूरी डॉक्यूमेंट्री या वो भी नहीं है, और जो है पिछले मतलब ऐतिहासिक घटनाओं के आधारित पे वो बनाए जाते हैं। The film showed how the American revolutionaries, real ragtag group. I mean, they were just, they weren't wearing uniforms or anything. They were just farmers, mercantile men,
whatever, you know, common men, you know. तो उस नाटक में ये दिखाया गया था किस प्रकार जो है अमेरिका रिवॉल्यूशन के दौरान जो है ये फार्मर और व्यापारी They had a लेके आया जा रहा है strong desire to win the revolution, and so they did. और उनका ये रिवॉल्यूशन को जीतने की बहुत ही तीव्र इच्छा थी और वो जीते इसी प्रकार Krishna had a plan कृष्ण का ये योजना थी to establish the United States of America. He had a plan to establish the United States of तो America. उनकी यूएस जो है यूनाइटेड स्टेट्स है इसको स्थापना करने की भगवान की प्लान था Not for sense gratification and sinful activity. That's not why Krishna established the United इंद्रिय States. तृप्ति और पापमय कार्य के लिए नहीं भगवान कृष्ण ने जो है इसका स्थापना की थी यूएस की Krishna established the United States because he knew that was the fertile soil where Prabhupada could plant the seeds. That's why. और भगवान कृष्ण ने योजना इसलिए की थी ताकि जो प्रभुपाद जी वहाँ जाके जो भक्ति का बीज है वो बो सके ताकि जमीन जो है So Srila Prabhupada made generals and lieutenants out of hippies. तो प्रभुपाद जी ने जनरल और लेफ्टिनेंट बनाया अपने आर्मी में उन हिप्पियों के द्वारा Like Tamal Krishna Maharaj was not born a general. और तमाल कृष्ण महाराज जैसे वो एक जनरल की तरह पैदा नहीं हुए थे Of course, he was very talented, you know, और वो बहुत ही टैलेंटेड थे natural born leader. और वो बचपन से ही जो है मतलब लीडर बॉन्ड थे But he was nothing until he was hand trained by Srila Prabhupada. और उन्होंने जो श्रील प्रभुपाद जी ने उन्हें स्वयं जो है उनको ट्रेन किया था You can be born with lots of ability, intelligence, everything, but it's all useless until you're trained by a pure devotee. और आपके पास भले ही बहुत सारा टैलेंट हो बहुत सारी खूबियाँ हो लेकिन यदि आप एक शुद्ध भक्त के द्वारा ट्रेन नहीं किए जाओगे शिक्षित नहीं किए जाओगे तो ये कुछ काम We've नहीं। discussed about the definition of pure devotee. हमने शुद्ध भक्त के बारे में चर्चा परिभाषा की चर्चा कर चुके Once हैं again, it does not mean automatically or Mahabhagavad automatically. It means who's following Acharya. So he was following Acharya, taking personal direction constantly from Srila Prabhupada. तो शुद्ध भक्त केवल जो है उत्तम अधिकारी और महाभागवत नहीं उसका शुद्ध भक्त वो है जो आचार्य को पूर्ण तरह पालन करे Many times Srila Prabhupada said, I have created your good fortune. प्रभुपाद जी कहते थे कि मैंने आप लोगों का सौभाग्य उदय किया है He took 100% credit rightfully. और Govinda. वो जो है वो पूर्ण तरीके से जो है प्रभुपाद क्रेडिट लेते थे इस चीज़ का Benefit of association with devotees. तो उस बुद्धि का फायदा है कि वो भक्तों का संग कर पा रहा है So many generals and lieutenants, I forget all the ranks of military, but under general comes sergeants. He didn't make so many generals, but sergeants, many sergeants. तो ये अलग अलग स्तर होते हैं जो आर्मी होता है उसमें सर्जन आते हैं फिर लेफ्टिनेंट आते हैं तो उसमें महाराज कहते हैं कि बहुत सारे जो है प्रभुपाद जी ने लेफ्टिनेंट And many lieutenants also. और लेफ्टिनेंट भी बहुत सारे बनाए I could have been described as a lieutenant because I was a temple president. और मेरे को भी जो है बोला जा सकता है कि मैं भी एक लेफ्टिनेंट था क्योंकि मैं खुद एक मंदिर का अध्यक्ष था I already read the letter that Prabhupada wrote to me where he was so pleased because he said, I'm counting on you, my senior devotees, to carry on this movement, you know. He was very pleased with me, actually. प्रभुपाद जी बहुत खुश थे कि जो है नौजवान जो भक्त है वो आगे आ रहे हैं हार समाज में When Prabhupada wrote me that letter, I was a 3-year devotee. और जब प्रभुपाद जी ने मुझे एक पत्र लिखा था तब मैं 3 साल का उस समय 3 साल हुए थे मुझे भक्ति में आए हुए There's some yellow boys that are 3-year devotees. और बहुत सारे अदर यहाँ बहुत सारे भक्त हैं जो 3 साल So that's why Prabhupada took a stand for what he wanted his devotees to be. He took a stand, a powerful stand. And that way, he took such a powerful stand for them, they became what he wanted. That's how it works. They became what he wanted because he took such a powerful, what he wanted. तो प्रभुपाद जी ने इतना स्थिर तरीके से जो है अपने शिष्यों को मतलब शक्ति दी उन्होंने अपना स्टैंड रखा कि और इसी के कारण जो है उनके शिष्य जो है वो बन सके जो प्रभुपाद चाहते थे I took a self-improvement seminar and they put stress on that, creating possibilities and taking a stand for somebody. और मैंने एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक सेमिनार किया था उसमें वो बता रहे थे कैसे मतलब हम Just like you, हमें स्टैंड लेना है you university preachers, you're taking a stand that these nice young men will become devotees. You take a stand. So you're
empowered by Guru Parampara, and then you pass that on. तो आप में से बहुत सारे यहाँ यूनिवर्सिटी में प्रचार करते हैं, तो आप लोग जो है उन नए भक्तों के लिए स्टैंड लेते हैं कि हाँ ये जो है आगे चल के बहुत अच्छे भक्त बनेंगे। You look at the, तभी जो है गुरु परंपरा द्वारा उनको शक्ति प्राप्त होती है। you look at those young men and you evaluate. Oh yes, he's going to be a first-class leader. Let me see what I can do. तो आप जो है उन लोगों को देखते हैं और उनको जो है देखते हैं कि ये जो आगे चल के लीडर बनेंगे। तो फिर हम And try to understand. We're not the doer. We're not the doer. हमें ये समझना है कि हम कुछ करता नहीं है। So all we're doing is we have the polish. हम बस इतना कर रहे हैं कि हम उनको चमका रहे हैं। They are tarnished silver. You know. वो जो है गंदा की मतलब सिल्वर है, लेकिन उसके ऊपर कुछ परत जमी भी है। You know, silver is subject to environmental influence. जैसे चांदी होता है तो उसको जब बाहर छोड़ दिया जाता है तो उसका प्रकृति का प्रभाव पड़ता है उसपे। When you don't polish silver, it turns black. यदि आप उसको चमका के नहीं रखेंगे तो वो काला पड़ जाता है चांदी। So many of these young men, Prabhupada trained us, look into their hearts. You ask Krishna, Prabhupada, Guru Maharaj, ask them to help you develop the skill to look at their hearts so you could, that's what Prabhupada wants. Evaluate. प्रभुपाद चाहते थे कि हम जो है मतलब हम अपना evaluate करें और हम अपने हृदय में देखें। Oh yes, this nice young man is a university student, but actually he's a devotee leader. You have to develop the vision to see that. और आप लोगों को ऐसा जो है विजन बनाना है कि देख सके कि ये जो भले ही इसके वो टैलेंट है और ये जो है बहुत अच्छा भक्त बन सकते हैं। Then all you do is get out the pot of polish and remove. सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम उन्हें एक स्क्रबर लाके उनसे चमका सकते हैं। That's all you have to do because they are solid silver to begin with. तो वो जो है कुछ चांदी है, तो हम बस इतना ही हमें करने की जरूरत है। All you do is polishing. You're bringing out the devotee that's already there. तो हमें सिर्फ जो है उनको उनके ऊपर से परत हटाने की जरूरत है, क्योंकि वो अंदर से पहले से ही भक्त बने हुए हैं। We call that preaching. और यही हम इसको That's what preaching actually is. Simply polishing off the black on the silver. That's what we call और यही preaching. प्रचार है कि जो बाहर काला जम जाता है चांदी के ऊपर उसको हटाना, यही प्रचार है। And it works. Otherwise, we wouldn't have so many former university students और ये काम करता है, क्योंकि हम अगर ऐसा नहीं होता तो sitting here today and become trainers and training others. यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं होते जो खुद प्रशिक्षण दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं। So try to understand that this is fulfilling Srila Prabhupada's dream. और आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, ये प्रभुपाद जी के स्वप्नों को पूरा कर रहा है। He always said, preach to intelligent class. प्रभुपाद जी कहते थे, प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि जो है In 1969, there was not much of this kind of preaching going on, university preaching. There were a little bit, but और उस समय जो है 1969 के दौरान ऐसे प्रचार नहीं चल रहा था। I did some university preaching. मैंने भी किया कुछ यूनिवर्सिटी का प्रचार, मैंने भी किया था। I used to preach to Hridayanath Maharaj. मैं प्रचार किया था हृदयानंद महाराज को। He was a student at the University of California. जब वो वहाँ पे एक स्टूडेंट थे। So I befriended him and I was cultivating him. So? I befriended him. I made friends with him. He was a university student. उनके साथ मित्रता की। And so one day was a very beautiful day in the springtime in California, just after the rainy season. Everything's green, flowers, birds singing, you know. तो एक दिन जो बताने वहाँ की बरसाती जब मौसम चला गया तो उसके बाद जब खुला आसमान। I had the guts in those days. There was a program, a rock and roll concert or something, out in the park in the hills behind the university. Everything green, very beautiful, and you know, hundreds of people gathered there for the event. यूनिवर्सिटी के पीछे जो है बहुत बड़ा पार्क था, तो वहाँ खुला आसमान में बहुत ही अच्छा गार्डन था, तो वहाँ पे उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था। There was a flatbed truck they were using for a stage. तो एक फ्लैट बेड जो मतलब सीधा जो होता है वो ट्रक यूज किया गया था उस दौरान। Without any invitation from anybody, I got up on that stage. तो बिना किसी के आमंत्रण दिए हुए मैं स्टेज पे चढ़ गया। Sang a kirtan. और कीर्तन शुरू कर दिया।
No invitation for anybody except Prabhupada and Chaitanya Mahaprabhu. और किसी ने आमंत्रण नहीं दिया था सिर्फ चेतन महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद जी के अलावा। So that day there was this student, Howard. छात्र के दौरान था। His name used to be Howard. तो उस समय उनका नाम हॉवर्ड था। And so I had been cultivating him. और मैं उनको प्रशिक्षण देता रहा था उस समय। He said to me, "Isn't it a beautiful day today?" तो उन्होंने कहा महाराज को आगे कि क्या आज बहुत सुंदर मौसम नहीं है? I said, "Yes." तो मैंने कहा हाँ आज है। Then just imagine how beautiful the Creator must be. तो आप ये सोचिए कि इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। That struck him in a thunderbolt in the heart. It worked. I mean, those words were so powerful. It struck him like a thunderbolt in the heart. He became a devotee. और ये उनको एकदम बिजली की तरह जो है उनके हृदय पे प्रहार किया और फिर वो जो है एक भक्त बन गए। Obviously, the words were presented or created, dictated to me by Krishna because, he reminded me decades later. I'd forgotten, but he reminded me decades later. और ये जो शब्द थे ये मुझे श्री कृष्ण ने स्वयं जो है मेरे को बताए थे। So we're just taking inner instruction from Krishna, and he's supplying ability, intelligence. Don't get puffed out and think you're the और जो other. है भगवान कृष्ण ही हमें जो है हमारी जो जितनी योग्यताएं हैं सब कुछ We are भगवान से just ही आ रही है तो we are कभी भी जो just है pawns, घमंड नहीं करिए। pawns in Prabhupada's game. That's all we are, but that's very powerful. यही जो है पूरा जो चल रहा है वो सब प्रभुपाद जी का ही स्वप्न है और हम यहीं पे When you're playing a chess game, how many of you know how to play chess? तो यहाँ पे कितने लोगों ने शतरंज खेला है? I used to play chess when I was younger. तो मैं भी शतरंज खेला करता था जब मैं युवक स्थिति में था। Some neophytes who don't know much about chess, they don't place much importance on pawns, and so if a bunch of pawns get taken off, they don't mind. तो कुछ जो लोग होते हैं वो जो प्यादे होते हैं उनकी तरफ इतना ध्यान नहीं देते, इतने सारे वो चले भी जाते हैं लेकिन उनको ध्यान नहीं देते। But those who are wise chess players know that pawns are valuable because they give protection to the other figures. अच्छे शतरंज के जो खिलाड़ी होते हैं वो देखते हैं कि नहीं ये जो प्यादे भी हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। So every pawn is valuable. एक एक प्यादा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। Fancy, if you allow all your pawns to be taken off, then your chances of winning the game are greatly reduced. और यदि आप जो है अपने सारे प्यादे को खो बैठते हैं तो आपका जो शतरंज जीतने का जो मौका है वो हाथ से चला जाता है। So we are simply pawns in Prabhupada's game, Mahaprabhu's game. We're pawns, that's it. हम जो है केवल एक प्यादे के समान है जो श्रील प्रभुपाद जी का शतरंज में ऐसे देखा जा सकता है। Don't allow Maya to take you off the chessboard. तो माया को ये जो है मत आने दीजिए कि वो जो है आपको हटा के Being a pawn in Prabhupada's game is a very powerful position. और श्रील प्रभुपाद जी के जो शतरंज के गेम में यदि है कि हम प्यादे भी हैं तो ये Just like when a chess game is going on, the pieces, they don't have independent intelligence. तो जो प्यादे होते हैं उनकी खुद की कोई इंडिपेंडेंस या खुद की कोई इच्छा नहीं होती है। They're controlled by the player who is the source of intelligence and move. प्यादे हैं वो मतलब कंट्रोल किए जाते हैं जो व्यक्ति खेल रहा है उनसे। Similarly, regardless of our service, we're just pawns in Prabhupada's game, Krishna's game, your भले ही Guru. हमारी कुछ भी सेवा हो हम लोग Hey, that's a very, हम प्रभुपाद जी के हाथ के very, प्यादे हैं। very powerful position to be in, actually, तो हम भले ही बहुत ही बड़े स्तर पे भी हो इस संस्था में because it's such a big game. क्योंकि ये बहुत ही बड़ा जो है खेल है। Spreading Krishna consciousness is all over the world is such a big game. तो हम जो है कृष्ण भावनामृत का इतनी जगह प्रचार कर रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ा खेल है। Because we're the foundation for 10,000 years. क्योंकि हम लोग जो है वो स्थापन कर रहे हैं अगले 10,000 वर्षों के लिए। That's where we are. We're the pawns in the game. We're at the beginning of the game for 10,000 years. तो हम जो है इस खेल की शुरुआत भी हैं और हम जो है प्यादे हैं और हम अगले 10,000 वर्षों के लिए हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। So we have to be very careful what kind of foundation we lay. तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार की स्थापना रखते हैं। If you're building a powerful building like a skyscraper building, there better be a first-class foundation. तो भले ही हम बहुत ही बड़ा जो है बिल्डिंग बना रहे हैं आकाश को छूती हुई लेकिन उसका जो जड़ है उसका फाउंडेशन बहुत Unless the foundation is strong, the building will crumble. तो अगर जो है फाउंडेशन बहुत मजबूत नहीं हो, नींव बहुत मजबूत नहीं हो तो वो जो है बिल्डिंग गिर जाती है। Like it or not, we are the foundation.
तो यही जो है नींव भी बहुत महत्वपूर्ण है। We should like it. It's glorious. विशु? It's glorious. We should like it. तो हमारी जो स्थिति है हमें जानना चाहिए कि ये बहुत ही ग्लोरियस है। Somehow or other, we've been chosen by Krishna to be foundation blocks in His game. That's तो wonderful. हमें जो है कृष्ण द्वारा चुना गया है कि हमें इस नींव का एक भाग बनने का मौका मिल रहा है। And when you're building a building with stones, there are different stones. Some are keystones. तो जब एक हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारे पत्थर होते हैं, लेकिन कुछ जो है प्रमुख पत्थर होते हैं उसमें। When you build an arch out of stone, there has to be a keystone at the top of the arch. तो एक आर्च अगर हम बना रहे हैं तो उसमें कुछ बहुत मुख्य पत्थर होते हैं। Keystone is what holds the arch together. तो जो मुख्य जो प्रमुख पत्थर होते हैं वही है जो आर्च को संभालता है। The other stones just slide into place, and the keystone holds it all together. So that's our leadership of our movement. तो बाकी जो पत्थर होते हैं वो मतलब और संभालने के लिए, लेकिन जो प्रमुख पत्थर होता है वो पूरे आर्च को संभालता है। So like in Vedic architecture, there are small archways. तो वैसे ही वैदिक जो कारीगरी है उसमें भी छोटे से आर्चवेज हैं that require smaller keystones. और जिसमें जो है छोटे इतने प्रमुख जो है पत्थर नहीं चाहिए होते। And there are large Maha archways that require very large, very powerful keystones. और कुछ बहुत बड़े आर्चवेज होते हैं, बहुत बड़े महा, जिसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर चाहिए होते हैं। That's the top leadership of our movement. और वही है हमारे मूवमेंट में जो प्रमुख लीडर। Hari Bol. हरि बोल। This is very scientific, try to understand. ये बहुत ही साइंटिफिक है, हमें इसे समझना। Prabhupada is, present tense, building a building, a huge giant building. और प्रभुपाद जी अभी इस समय जो है एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं। And we're fortunate enough to be part of the building crew. और हमें जो है सौभाग्य है कि हमें इस बिल्डिंग को बनाने का सौभाग्य मिला है। Following in the footsteps of those devotees who dedicated their youth when they were your age to building this great movement. और जो है हम उनको फॉलो करते हुए जिन्होंने जो अपने जब जीवन के यूथ में थे उन्होंने इस मूवमेंट को हेल्प किया अपने बड़े होने में। So anyways, Prabhupada continues. तो इसी प्रकार आप प्रभुपाद आगे बताते हैं पत्र में, दर्शन में। Haridas Thakur is the graduate from Parvajikacharya. हरिदास ठाकुर जो है वो परिव्राजकाचार्य के आगे के स्तर पे है। He could sit in one place and chant the holy name. और वो जो है एक स्थान पे बैठ के निरंतर जप कर सकते हैं। But actually, because Srila Prabhupada is founder and acharya of our movement, लेकिन वास्तव में श्री प्रभुपाद जी जो हमारे संस्था के संस्थापकाचार्य हैं। we see that's not how it's going. It's not the sannyasis, unless they have severe health problems, they're forced to retire. तो जो है सन्यासी जो है हमारे अभी के भी जिनकी अगर स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं होता। I've heard the rumors that one of the sannyasis who was one of the founding fathers of the movement was forced to retire for health reasons. Usually it's for health reasons. तो मैंने सुना है कि ये जो एक हमारे प्रमुख जो एक सन्यासी हैं वो रिटायर हुए हैं क्योंकि उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं था। But otherwise, our ISKCON Parvajikacharya sannyasis, they will never retire. लेकिन हमारे जो ISKCON के जो संस्था के जो जितने सन्यासी हैं वो कभी रिटायर नहीं होंगे। There's a saying in the West, they will die in the saddle. Saddle like the saddle on a horse, the seat on a horse. घोड़सवारी करते हुए ही वो अपना प्राण छोड़ते आगे। So it's a Western saying, American saying, dying in the saddle. तो ये एक अमेरिकन कथन है कि जो अपने प्राण टालना। Supposing you're घोड़सवार करते involved in some warfare with someone and you're on a horse and there's a saddle on the horse. तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि यदि आप एक युद्ध में हैं और आपके एक घोड़सवारी की तरह उस पे बैठे हैं। That's the seat that you're sitting on. तो वो जो है एक बैठने की स्थान है जहाँ हम बैठे हैं। The palanquins, they're carried in Vedic wars and the interstellar wars. The palanquins are carried by elephants and all kinds of other creatures. तो जो पालकी है वो जब वैदिक टाइम में जो है जो बड़े-बड़े हाथी और उनके द्वारा ले जाए जाते थे। How many of you read about the wars
between the devas and the demons. तो मैं कितने जनों ने आप में से देवता और असुरों के बीच में जो युद्ध है उसके बारे में सुना है? It's amazing, you know. बहुत ही They're all kinds of animals. They बहुत सारे प्रकार के जानवर They were not just riding on horses. और जो है उसमें जो घोड़ों का भी वर्णन किया गया है. Some Kshatriya's shoulder was riding on a rabbit. और कुछ जो असुर थे वो रैबिट एक खरगोश के ऊपर भी जा रहे थे युद्ध करने. Don't ask me why. I would not choose a rabbit to ride on if I was a warrior. आप मुझसे मत पूछिए क्यों वो खरगोश के ऊपर जा रहे थे. मैं कभी खरगोश को नहीं चुना. Well, I'm not making this up. It's in the Bhagvatam. और मैं ये अपने से नहीं बना रहा हूँ, ये भागवतम में लिखा है. All kinds of other creatures that they ride on, you know. और भी बहुत सारे प्रकार के जीव थे जिस पे वो युद्ध करने. So, very colorful show. Colorful show. और ये बहुत ही रंगीन शो है. So, we are just pawns in this game, and we shall not be retiring. और हम जो है प्यादे की भांति है इस पूरे खेल में और हमें कभी रिटायर नहीं होना. So remember this example from the West, die in the saddle. तो हमें इस उदाहरण को याद रखना है, die in the saddle. And in the Srimad Bhagavatam, in the wars, you see how many warriors died in the saddle, you know? They, because somebody pierced them throw a trident and pierce them, or cut off their head or something, you know? हमें भी देख सकते हैं कितने सारे योद्धा जो है युद्ध स्थल में ही मारे गए हैं. किसी को त्रिशूल लग के, किसी को धनुष बाण लग के. Still in the saddle of the creature that they're riding. Still in the saddle of the creature that they're riding. तो इसी प्रकार जो है उनको युद्ध स्थल में ही वो मारे गए. You understand what saddle is now? This type of seat, you know. वो एक बैठने का स्थान है घोड़े के ऊपर जो है सैडल. Usually on horses, but all these other extraordinary variety of animals and creatures are described in the interstellar war and in the Bhagavatam. तो ये जो अलग-अलग जो पशु है जो युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए थे उनका वर्णन किया गया है भागवतम में. Why read some cheap junky novel? क्यों जो है हमें किसी अन्य पुस्तक को पढ़ने की जरूरत है, नॉवल जिसमें गंदे भरा पड़ा है. I said that to a crowd of 800 congregation members in Calcutta. कलकत्ता में श्रील प्रभुपाद जी के विषय में बता रहे हैं. Where they're not famous for book distribution, their book scores are pathetic. Their daily book score is terrible. तो वहाँ पे जो पुस्तक वितरण है वो बहुत ही But one day there was a congregation meeting with 800 congregation members, and it was a congregation mela. एक बार कांग्रेगेशन का एक मीटिंग था, उसमें लगभग 800 लोग आए हुए थे. Somehow or other, out of the blue, I like that saying, out of the blue. तो किसी प्रकार से out of the blue. Do they say that in India? क्या ये भारत में कहा? No, it's a very common American saying. Out of the blue is a common American saying. अमेरिका में ये कहावत है out of the blue. I like to say, we don't ask, what is the blue? We don't ask. हम नहीं पूछते कि ब्लू क्या है, आकाश क्या है. We know who the blue is. हम जानते हैं ये नीला रंग क्या है. Haribo. The blue is a person and his name is Krishna. और जो नीले हैं वो है कृष्ण. He likes being blue. वो उन्हें नीला पसंद है. He can be other colors if he wants to. Lord Rama is green. तो ये अलग-अलग रंग भी है और भगवान राम को हरा रंग. He's described as being the color of moss. You know, moss growing on the ground. तो एक मॉस के भांति जो जमीन पे उगता है उस प्रकार का जो रंग है वो रंग. Most Indian artists, because he's Vishnutava, most Indian artists show Rama as being blue, but that's a mistake. तो बहुत सारे जो भारतीय चित्रकार हैं वो भगवान राम को नीला बताते हैं और ये गलत है. Nobody ever told them because they have no authority. You know, they're just trying to use their ability for their artwork. तो वो जो है अपने मन से ये सब बना रहे हैं. Nobody told them, no, Rama is green, he's not blue. और किसी ने उनको बोला नहीं है कि भगवान राम जो है वो हरे हैं, वो नीले नहीं हैं. And the Lord can assume any other form or color that he likes. भगवान कोई भी रंग जो है जो उनकी इच्छा है वो. They say variety is the spice of life. और ऐसा कहा जाता है कि variety. No, Krishna Variety is the spice of likes variety. He can appear as a hog.
और भगवान को जो है वैरायटी पसंद है तो वो एक शुकर के रूप में भी आ सकते हैं, lion-headed, शेर के रूप में भी आ सकते हैं, Ugra Nrsimha. उग्र नरसिंह के रूप में, Or he can appear in so many other forms. और वो नाना प्रकार के रूप में आ सकते हैं. He's always Purusha, he's always having fun, in whatever form he appears in, just to have fun. And see, he has fun, and he accomplishes the mission at the same time. और भगवान जो है आनंद उठाते हैं हर अपने कार्य में, और साथ में जो उनका उद्देश्य है वो भी उसको पूरा करते हैं. Paritanaya sadhunam vinashayata duskritam. तो ये वर्ड्स बता रहे हैं महाराज गीता से. To give love and affection to sadhus, sadhunam, paritanaya sadhunam, to give love and affection to the devotees. परित्राणाय साधुनाम, तो अपने भक्तों को जो है उनको प्रेम प्रदान करने के लिए, And to be the thunderbolt of death to the demons. और विनाशाय से दुष्टता, अपने जो दुश्मन है उनको मारने के लिए. The whole time he's Purusha, he's just having fun, और हर समय जो है भगवान आनंद का just enjoying. जो हमेशा आनंद में रहते हैं. He has his Vishnu expansions for killing demons. और उनके जो है बहुत सारे विष्णु अवतार हैं जो राक्षसों को वध करने के लिए. It is said that when Krishna kills demons in Vrindavan, it's Vasudeva expansion. और भगवान कृष्ण जब वृंदावन में असुरों का वध करते हैं वो अपने वासुदेव विस्तार के माध्यम से. You have heard that before? क्या आपने सुना है इसके बारे में? See, Chibanga Krishna, the coward boy, he doesn't kill demons. तो जो त्रिभंग कृष्ण है वो एक ग्वाले हैं, वो असुरों को नहीं मारते. He has a lookalike. और ये उनका जैसे दिखते हैं. Like I worked in Hollywood for a while as a movie extra. और मैंने एक हॉलीवुड में एक एक्टर की तरह काम किया है. It was very interesting. और ये बहुत ही रोमांचक है. But so when the hero or the demon gets thrown down the stairs, it's a risky business. They could break bones. You know, the actor could break bones. और जब किसी एक्टर को जो है सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया जाता है तो ये बहुत ही खतरनाक बिजनेस है, क्योंकि उसकी हड्डियां भी टूट सकती हैं. The director shouts, "Oh, and cut!" तो उसी समय जो है जो डायरेक्टर होता है वो चिल्लाता है, In other words, रोक दिया जाए अभी, stop the cameras from rolling. रोक दिया जाए, कैमरे को रोक दिया जाए अभी. And then the stunt person goes in. और फिर जो है जो व्यक्ति जो स्टंट जो करता है, They're wearing उसको भेजा जाता है. steel plating on their chest and और वो जो है अपने छाती के ऊपर स्टील padding on their knees and all that underneath their costume. पूरा मतलब सुरक्षा, अपना शरीर का सुरक्षा करके They have to protect. They're going to be thrown down the stairs. They have to have the protection so they don't get injured. तो उनको यदि सीढ़ियों से फेंक भी दिया जाए तो उनको जो है लगे नहीं, इसलिए उनको सारा सुरक्षा. Stunt person. तो एक स्टंट पर्सन को भेजा जाता है. Sometimes there are doubles also. Doubles means somebody who resembles the actor or actress to some degree, and they are sometimes plugged in. कभी कभार जो है दो व्यक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है कि व्यक्ति अगर वो एक्टर के तरह नहीं भी दिख रहा है तो उसको बुला लिया जाता है. Vasudeva Krishna, he kills demons. Expansion. उसी प्रकार Look alike. कृष्ण जो है वो कृष्ण के जो विस्तार है वो मारते हैं Stunt man. असुरों को. वो है स्टंट मैन. Oh, Chubanga coward boy, he doesn't kill demons. और जो कृष्ण है वो तो त्रिभंग रूप में He ग्वाले हैं, वो मारते नहीं है. plays leapfrog with his friends and stuffs prasad in their mouth. उनके जो मित्र हैं वो लेके उनके मुख में प्रसाद भर देते हैं. Killing demons, that's Vasudeva. और असुरों को मारने के लिए जो आते हैं वो है वसुदेव. But he looks identical to Krishna. पर वो दोनों जो है एक समान दिखते He's हैं. two-armed expansion, not four-armed. और वो जो है दो ही भुजा जो है विस्तार है, चार भुजा वाले नहीं. So in this way, we enjoy hearing about all these different activities of Krishna. इसी प्रकार जो है हम आनंद लेते हैं भगवान कृष्ण की ये विभिन्न लीलाएं सुन के. So Prabhupada says, be always busy, first stage, last stage. हमेशा जो है व्यस्त रहिए, यानी पहले स्तर पे या आखिरी स्तर पे. So the miracle is that Prabhupada is creating sannyasis who will preach up to their last breath. This is going on, you know. We see some of my. जो है ऐसे सन्यासी इसको बना रहे हैं जो आखिरी अपने सांस तक जो है प्रचार करते हैं. So my sannyasi godbrothers, their health is failing completely, but they are still doing the best they can to मेरे preach. बहुत सारे गुरु भाई भी हैं जो
उनके शरीर जो है स्वास्थ्य बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो प्रचार में लगे हुए हैं। They'll preach from the hospital bed, certainly. और वो जो है हॉस्पिटल के अंदर बेड पे रहते हुए भी वहाँ पे रह के प्रचार करते हैं। In the past 15 years, believe it or not, I've been to the hospital about 8 times, not so good. पिछले 15 सालों में मैं जो है 8 बार अस्पताल जा चुका हूँ। Open heart surgery and infections, different things. और जो है हृदय का भी रोग उसमें दूर किया गया, और मैं बहुत सारे अलग-अलग Did I tell you about when I was in the hospital and shouting Govinda, Govinda? तो अस्पताल में आपने सुना है गोविंदा गोविंदा कहते हुए? You weren't here that day. Govinda, Govinda. गोविंदा गोविंदा। Anyways, I was in intensive care because they didn't have a room open for me. तो मैं जो है आईसीयू में था, इंटेंसिव केयर में। So I was stuck in intensive care. I didn't need it, but that was the only room available. तो उसके अलावा कोई कमरा था नहीं, तो इसीलिए मेरे को वहीं पे ही रोका गया था आईसीयू में। So then I heard some loud shouting तो मैंने फिर वहाँ पे जो है बहुत ही ऊंचे and commotion at the booth only a few meters away from me. A booth only a few meters away from me. तो मेरे जो कमरा था उससे कुछ ही दूर पे जो है एक बूथ था, तो वहाँ पे बहुत ही शोर शराबा होने लगा। A crowd of nurses and hospital attendants were gathering over there. और सभी जो अस्पताल के लोग थे वो वहाँ एकत्रित हो रहे थे। I wondered, and I heard this loud thumping noise. Thumpa, 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 thumpa. Yeah. Thumpa, 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 thumpa. ये जो आवाज है ये मैंने बार-बार वहाँ सुनी। Translate, thumpa, thumpa. It was the sound of the electronic machine they were using on the man's heart because he was dying of a heart attack. ये जो है जो ध्वनि आ रही थी, ये मैंने उस किसी व्यक्ति के ऊपर एक इलेक्ट्रिक मशीन यूज कर रहे थे, वो मरने वाला था हृदय रोग से। As a last resort, an attempt to restart the heart because the heart stops, you know. So in order to try to restart it, they do this very dangerous procedure. तो ये जो है उसकी बस आखिरी सांसें ही चल रही थी, और ये बहुत ही खतरनाक जो है तरीका है उसके। They put an electronic machine on the heart and zap high voltage through your heart. हृदय के ऊपर जो है वो मशीन रखते हैं, और उससे जो है बहुत ही बिजली जो है प्रदान करते हैं उसको हृदय को, ताकि वो वापस चल सके। A risky business because that could also kill the person, you know. But then what can they do? They're trying to save the patient. They don't have any choice, you know. लेकिन उसके अलावा भी उनके पास और भी। When the heart stops beating, it's finished. और यदि आपका हृदय जो है अगर वो चलना बंद हो जाए तो फिर So I heard this loud thumpa, 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 and the crowd is gathering. तो जैसे ही ये जो आवाज बार-बार हो रही थी, तो सभी जने अस्पताल के वहाँ I asked somebody, what is going on? मैंने किसी व्यक्ति से पूछा यहाँ क्या चल रहा है? They said, oh, that man's dying of a heart attack. बताया कि वहाँ एक व्यक्ति है वो हृदय रोग से मर रहा है। Immediately I started shouting, और तभी जो है मैंने चिल्लाना शुरू किया, Govinda, 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 Govinda. I was loud, nobody said anything, not a word. और मैं बहुत ही जोर से ये चिल्ला रहा था। This was intensive care unit. और किसी ने मेरे को कुछ नहीं बोला, और भले ही आईसीयू था उस समय वहाँ पे। Not one person, no nurses, no doctors, nobody came and said, shh, 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 sir, this is quiet, this is intensive care, quiet, quiet. No. कोई भी जो है वहाँ पे डॉक्टर भी था, कोई मेरे पास नहीं आया, भले वहाँ आईसीयू था, और कोई ऐसे बोलने नहीं है कि नहीं आप चुप रहिए, आप धीरे बोलिए, ये आईसीयू है, नहीं, किसी ने नहीं। If you want to know the difference between the United States and India, the difference is in America, I couldn't have done that. Immediately, half a dozen attendants would have said, hey, quiet, sir, shh. तो यही जो है महाराज कह रहे हैं, अगर उस समय अमेरिका में होता यही अस्पताल, तो वहाँ पे तुरंत डॉक्टर आके मुझे रोक देते, नहीं चुप हो जाइए, लेकिन यही भारत में। But even the most fallen Indian knows who Govinda is. लेकिन जो सबसे पतित भारतीय भी है वो भी जानता है कि गोविंद कौन है। That's why there's hope for this movement, you know. Once again, a different type of polishing. A lot more polish is required. तो यही है इस मूवमेंट का होप है कि हम जो है वहाँ पे बहुत गंदगी। They're all devotees, but they have forgotten. You see. ये सब भक्ति है, लेकिन वो सब भूल। Unless they were devotees, why would they allow me to chant Govinda, Govinda? अगर वो भक्त नहीं होते तो मुझे क्यों Govinda, Govinda. Then he died. और वो व्यक्ति फिर उसके बाद मर गया। Hearing this loud chanting of Govinda, Govinda. और गोविंदा गोविंदा सुनते हुए उसने अपने प्राण त्याग। Just consider
that Krishna, Tribhanga Krishna, the flute player, और ये सोचिए आपके त्रिभंग कृष्ण जो है, जो मुरलीधर है, his eyes and ears are everywhere. He's the supreme witness, and he keeps an eye on me. और उनकी जो है आंखें हर जगह हैं, और वो मेरे ऊपर He विशेष tracks everybody, you know, विशेषकर ध्यान रखते हैं, और वो सबको आकर्षित करते हैं। like electronic tracking. They put electronic devices for tracking people. जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, वो सभी लोगों को आकर्षित करता है। All of us are being tracked by Krishna. तो मैं हमेशा भगवान कृष्ण से अट्रैक्ट होता हूँ। You know, they keep a large screen. You know, sometimes like criminals. You know, they put nowadays the jails are very crowded. क्रिमिनल जो अभी जेल, जो आजकल की जो जेल है, वो बहुत सारे लोग उसमें रहते हैं। So newer programmers they put an electronic device, electronic bracelet on the ankle or wrist of the prisoner. एक जो कैदी था, उसके हाथ के ऊपर एक डिवाइस बांधा था। It's going beep 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 beep. तो वो पूरे समय जो है इस प्रकार की ध्वनि करता था। Sending a signal to a satellite. और जो एक सैटेलाइट है, उसको वो एक सिग्नल The भेजता था। satellite is bouncing the signal down to a special control center. तो वहाँ जो सैटेलाइट थी, वो जो सिग्नल आता था, वो उसको एक कंट्रोल सेंटर पे भेजता The था। control center staff are sitting there watching very carefully. और कंट्रोल जो सेंटर था, वो उनके एक कार्य That prisoner is being tracked. कार्य को देखता था, और उसकी हर एक गतिविधि को नापा जाता था वहाँ। They're under strict control because, and then if something happens, if the prisoner goes somewhere they're not supposed to go, तो वहाँ पे बहुत ही कड़ा प्रबंधन था। तो अगर वो जो कैदी था, वो कहीं भी जाने का प्रयास करता था, or the green light, blinking green light, immediately turns to red. तो जो उनके हरी बत्ती जो चल रही थी, वो तुरंत जो है लाल में परिवर्तन हो जाता है, Siren goes off. और जो है वहाँ And because siren बजने लग जाता the है। location of that person is pinpointed by satellite, so they know exactly where he is. और सैटेलाइट द्वारा जो है उस व्यक्ति को पिन पॉइंट किया जाता है, बताया जाता है कंट्रोल सेंटर में, और पता चल जाता है व्यक्ति कहाँ है। No guesswork involved. और कोई भी जो है इसमें गैस मतलब कुछ करने If की the जरूरत if the नहीं। alarm goes off, जो है अलार्म जो है बजना शुरू हो जाता है, 5 police cars would descend on that area instantly और तुरंत जो है 5 जो पुलिस के आदमी होते हैं, वो वहाँ पहुँच जाते हैं and capture the rogue. Capture that person. और उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए। So that's a negative example. तो ये जो है एक गलत उदाहरण है। But on the positive side, we are all being tracked by Krishna. लेकिन इसको हम अच्छे उदाहरण से देखें तो हम सब जो है Constantly. कृष्ण से We're on his radar. Don't think, oh, well, I'm a new devotee. I've just been chanting a हम little सभी जो है while. कृष्ण के से आकर्षित हैं। Oh, I'm not initiated. Krishna doesn't care anything about हमें me. ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, कृष्ण हमें परवाह नहीं करते, हम तो दीक्षित भी नहीं है, नहीं Oh, भगवान। false arguments, Maya argument. तो ये जो है गलत तथ्य है। Krishna loves all his parts of what to speak if you try to chant Hare Krishna. और कृष्ण सभी को प्रेम करते हैं, जो भी भक्त A little है, something you're doing, trying हरे to कृष्ण का जप कर रहा Patram है। puspam phalam toyam joyam bhakti pilachate. So people, when there's flowers, we offer flowers. Even uninitiated person offers flowers. भले ही किसी व्यक्ति का दीक्षा भी नहीं है, लेकिन वो भगवान को फूल अर्पित करता है। तो So Krishna's tracking. कृष्ण जो है सब कुछ देख रहे हैं, Who's saying my name? Who's saying my कौन name? मेरा नाम का जप कर रहा है, कौन मेरा नाम का जप कर रहा है। Oh, it's Bhakta Anil. He's saying my name. ओ ये भक्त अनिल है जो मेरे नाम Very का nice, जप कर रहा है। very nice, very nice. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। So the radar is going 24 hours a day, भगवान का जो रेडार है वो 24 घंटे चलता रहता है दिन भर, tracking. और जो देखता रहता है, ट्रैक करता रहता So Krishna knew, of course, that I was in the hospital. है। कृष्ण जानते थे कि मैं उस समय एक अस्पताल में हूँ। Try to understand. That man died by the will of Krishna, by the will of God. He died when I was there, not by chance. If you want to be a stupid atheist, oh, by chance, Maharaj, by chance. और ये कृष्ण की स्वयं इच्छा थी, प्रबंधन था कि जब महाराज वहाँ उस अस्पताल में थे, Give it तब up. व्यक्ति जो है वहाँ मरा Yeah, था। give it up. We don't like this atheism nonsense. ये कोई चांस की बात नहीं है, ये भगवान कृष्ण का It was योजना है। not by accident. Krishna micromanaged it. Try to understand.
Strain your puppy brain to understand Krishna micromanaged it. तो अपनी छोटी बुद्धि को जो है इससे आप समझने का प्रयास करिए कि भगवान ने ये योजना बनाई थी। Does he award the whole sound of the holy name to everybody that's dying? तो क्या भगवान सभी के लिए ऐसी योजना करते हैं कि सब जने हरि नाम सुन सके? नहीं। No. Due to some past activities, that man उसने कुछ पुण्य किए थे अपने जीवन में। was awarded to hear the name of Govinda, 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 as he was dying. जब वो मरने वाला था, He was transferred to Gokul. और वो सीधा जो है गोकुल चले गए। Of course, he was full of material desires. That's why he had to go to Gokul and not to Goloka. Can't go direct to Goloka. No way. तो वो जो व्यक्ति था वो पूरा भौतिक इच्छाओं से भरा हुआ था, तो इसीलिए वो जो है गोकुल गया, वो गोलोक नहीं गया। Have to undergo some purification. तो उसको जो है कुछ Full of शुद्धिकरण कराना होगा। full of material desires, you have to go. So that's what Gokula is, to burn off your material desires. इसलिए कि उन लोगों को शुद्धिकरण करने के लिए। For example, जिनकी भौतिक इच्छाएं बची हैं। the married gopis in Gokul, तो गोकुल में जो है शादीशुदा वैवाहिक जो गोपीज हैं, गोपियां हैं, they have babies. उनकी भी संतानें हैं। So that means there was some sex activity. तो उन्होंने मतलब कोई यौन संबंध रखा है। So in Gokula, you have some sex desire, you can become a gopi or a coward man. तो यदि गोकुल में आपकी कुछ यौन की इच्छा है तो आप एक गोपी बन जाते हैं या And तो गोप finish बन जाते off हैं। those material desires. तो वो उन जो Special, material desire हैं, जो very भौतिक high, इच्छाएं हैं, उनको खत्म very करने high position for completing your material desires. See, that's Gokula. Try to understand. तो गोकुल यही है हमारे भौतिक इच्छाओं को खत्म करने का। It's an image of Goloka, but the devotees in Gokula, they may be unfinished product. तो वो है गोलोक की परछाई है जो गोकुल है, और उस समय जो भक्त होते हैं वो इतने And they're नहीं होते हैं, sent to Gokula to finish up their purification. और उनको गोकुल भेजा जाता है अपनी भौतिक इच्छाएं खत्म करने के और शुद्धिकरण के लिए। For example, the gopis of Gokul, और उदाहरण तौर पे जो they're गोपियां हैं गोकुल की, already in love with Krishna, और वो जो है कृष्ण के साथ ही है, but maybe some more purification required. और उन्हें और भी जो है उच्चतम स्तर जाने की जरूरत है। They hear Krishna's flute and they go mad. और जब वो कृष्ण की जो मधुर बांसुरी को सुनती है तो वो एकदम पागल हो जाती है। They know Krishna's calling them, come dance with me, come dance with तो me. वो जान जाती है कृष्ण मुझे बुला रहे हैं और मेरे साथ आइए नृत्य कीजिए। So they're trying to run out the door, तो वो जो है दरवाजों से भागने की कोशिश करते हैं बाहर घर but से। their husbands or relatives, they grab them and और उनके restrain जो them, पति होते हैं, उनके जो और रिश्तेदार होते हैं वो उनको पकड़ लेते हैं, trying to keep them from going. उनको पकड़ के रखते हैं कि नहीं तुम जा नहीं सकते। They know that Krishna has already stolen the heart of और वे जानते हैं कि कृष्ण ने इन लोगों का their हृदय पहले ही चुरा their लिया है। gopis, so they restrain them. They're fighting against Krishna, so to speak. तो वो जो है कृष्ण के खिलाफ लड़ रहे हैं। Sometimes the vipralamba is so severe. तो कभी कभार जो विप्र लंबा होता है वो इतना These young girls खतरनाक होता है। being forcibly restrained from meeting with Krishna, on hearing the sound of his flute, they go mad. तो यदि जो उनको जो गोपियां हैं उनको रोका जाता है, जब कृष्ण जब बांसुरी बजा रहे तब उनको रोका जाता है तो वो एकदम पागल हो जाते हैं। Sometimes the vipralamba is so severe, they leave their body. कभी कभार विप्र लंबा इतना गाढ़ा हो जाता है कि वो अपने शरीर This time, when they leave their body, it's Goloka. और इस वक्त अगर जब उन्होंने शरीर छोड़ा है तो वो सीधा गोलोक जाते हैं। I try to understand, it's very scientific. इसको समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही साइंटिफिक है। Anyway, so I was in the hospital. It was time for me to go to a private room. तो मैं उस समय जो एक अस्पताल में था, They put me on this rolling bed thing, you तो know. मुझे जो है एक बिस्तर पे रखा था, सुलाया गया था जिसपे And there were some attendants, and they were supposed to roll me into the private room. तो वहाँ के कुछ जो कार्यक्रम होते हैं वो लोग मुझे किसी और जगह ले जाने के लिए आए थे। All of a sudden, the attendants who were rolling my wagon, they all ran away. तो जो वहाँ जो नर्स और जो लोग थे वो वहाँ से ले जा रहे थे तो अचानक से वो छोड़ के चले गए मुझे। I wanted to get out of there. तो मुझे अचानक से छोड़ के चले गए। and intensive care is not an Ananda place, you know. आनंद तो ये कोई आनंद की स्थान नहीं है यार, इंटेंस जो So I was neglected. I was lying on this rolling bed, you know. तो मुझे वो ऐसे ही छोड़ के चले गए थे वहाँ पे। And everybody had fled. All the attendants and
had fled. जितने भी वहाँ जो अटेंडेंट्स थे जो अस्पताल के वो सब चले गए मुझे छोड़ के। I was irritated. I wanted to get out of there. और मैं वहाँ सोचने लगा मुझे वहाँ जाने से मेरे को वहाँ से Now निकलने की बहुत what? इच्छा थी। Now what? I was thinking, now what? Why am I lying here? Nobody's pushing my wagon. तो अब मेरे को कौन ले जाएगा यहाँ से, अब कोई धक्का दे ही नहीं रहा है मेरे को। Then somebody said, oh, well, there's a man who's dying in the back of the room back तब there. किसी व्यक्ति ने आके बताया कि एक पीछे वाले कमरे में कोई व्यक्ति मरने The वाला है। distance was about from here to the wall. It was quite a ways, you तो know. वो जो व्यक्ति बहुत दूर था, लगभग यहाँ से उस दीवार जितना दूर, How many meters? 20 meters maybe? लगभग 20 मीटर होगा ये दूरी। 20 meters away, a crowd was gathering 20 meters away. तो बहुत सारे लोग एकत्रित थे लगभग 20 मीटर दूर। Nurses, doctors, attendants, you know. नर्सेज और डॉक्टर जो थे। I asked somebody, what on earth is going on? I was irritated. मैं बिल्कुल परेशान हो गया था कि क्या चल रहा है यहाँ पे। They said, oh, well, this man's dying of a heart attack. और फिर किसी ने बताया कि वहाँ एक व्यक्ति जो हृदय रोग से मर रहा है। Well, that was my cue. और यही जो है मेरे लिए Govinda, Govinda! गोविंदा गोविंदा Govinda, Govinda! गोविंदा गोविंदा Govinda, Govinda! Govinda, Govinda! गोविंदा गोविंदा। Every single person, I mean, I was so loud. Everybody, all the nurses, doctors, everybody heard me. I was very loud. In इतना जोर से चिल्लाया कि हर एक नर्स हर एक डॉक्टर ने ये सुना। fact, I had to be louder than before because the dying man was 20 meters away. पिछली बार से ज़्यादा इस बार तेज मुझे बोलना पड़ा क्योंकि जो मरने व्यक्ति So I was twice as loud as before. और मुझे जो है पिछली बार से दुगना तेज चिल्लाना पड़ा। गोविंदा Govinda, 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 Govinda. And the man died. The man died. और फिर जो है व्यक्ति की मृत्यु हो गई। Completely bathed in the holy name of the Lord. पूरी तरह से हरिनाम से स्नान कर रहा व्यक्ति। Sudurlabha, very rare. दुर्लभ, बहुत ही मुश्किल है ऐसा। Out of billions of people on this planet, how many died bathed in the holy name of Krishna? और बहुत मुश्किल है कि इतने सारे लोगों में से कोई कितने Especially लोग the हैं जो intimate- हरिनाम से अपलावित Especially the intimate name of Krishna, Govind. Govind is a very intimate name of Krishna. और गोविंद जो है भगवान का बहुत ही निज भगवान I mean, it's Krishna playing on his flute. That's Govinda. भगवान जो है अपने त्रिभंग रूप में है, यही गोविंद है। And even though I was shouting so loud, और मैं इतना जोर से चिल्ला रहा था तो भी not one nurse or attendant or doctor, nobody said, shh, quiet. Not one person. डॉक्टर ने या किसी नर्स ने मेरे को आके रोका नहीं कि नहीं तुम चुप हो जाओ। They knew what I was doing, and they appreciated it actually. और नहीं वो जानते थे कि मैं जो हूँ सही हूँ। और वो Because every Indian knows who Govind is. और इसीलिए जो हर भारतीय भले नहीं जानते हो कौन है गोविंद। So nothing was missing, you know. तो इसीलिए कुछ भी मिसिंग नहीं था। So it was very wonderful occurrence. But what I want you to understand is, was it by accident? तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि क्या ये कोई Did those two men die when a devotee was present and क्या वो जो दो व्यक्ति जो मरे हैं who was और कि कोई भक्त वहाँ who was bold enough to shout, Govinda, Govinda, वो भक्त इतना Govinda, Govinda? गोविंदा गोविंदा। See, Krishna knew I would do that. कृष्ण जानते थे कि मैं ऐसा करूँगा। So he planted me in the right place at the right time, just for the benefit of those souls, somehow or other, pious activities in the past. तो उन्होंने मुझे उस सही स्थान पे सही समय पे भेजा ताकि उन जो आत्माएं थी उन लोगों का That they could die hearing the name of Govinda. उन लोगों को बेनिफिट करने के लिए और ताकि वो जो मरे तब वो गोविंद का नाम सुन And सके। quite possibly be transferred to Gokula. और बहुत ही मौका है कि वो जो है सीधा Do absorption of the holy name. पूरी तरीके से नाम सुनते हो। They probably knew the name of Govinda, Hindus, you know. वो जानते थे जो व्यक्ति मर रहे थे वो भी जानते थे कि गोविंद कौन है। So we should all do like that. तो हम सबको ऐसा करना चाहिए। Boldly spread this Krishna consciousness movement. बुलंद होके जो है हमें कृष्ण नामृत का There प्रचार करना है। Other stories and hospital stories. तो ऐसी और भी जो है घटनाएं हैं अस्पताल की। But we're out of time today. तो हमारा जो है समय समाप्त हो गया है। Jagaguru Sri Baba Ki Jai. Gopamanande Hare Hare Bol. स्वामी महाराज की